Hello friends, I'm Dr. Sumita Misra. I'm an IAS officer of the 1990 batch and I'm currently working as Additional Chief Secretary, Medical Education Research and Women and Child Development in the Government of Haryana. Today I'm going to be sharing a sort of brief capsule of some of my postings in the last 33 years. And obviously बहुत ही short में, क्योंकि otherwise तो postings गिनाते ही time निकल जाएगा. मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी एज एसडीएम नारायणगढ़, जो अम्बाला ज़िले में है. एंड नारायणगढ़ एक बहुत ही शांत सा छोटा सा सेमी हिली एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है. और मैं वहाँ पूरे 2 साल एसडीएम रही. एंड वन ऑफ द मोस्ट enjoyable things that I was part of at that time was I was passionately involved in running the total literacy campaign, साक्षरता अभियान. और दिन में भी और रात में भी अकेले वो जीप से गांव-गांव जाके रात में वो महिलाओं के और किसानों के साक्षरता क्लासेस में बैठ के बड़ा मज़ा आता था. कुछ साल बाद मैं डिप्टी कमिश्नर यानी उपायुक्त रेवाड़ी रही और ये भी एक मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा. हमने वहाँ पे एक हेल्थ कैंपेन फॉर ऑल चलाया, जिसके लिए बाद में स्टेट रेड क्रॉस और नेशनल लेवल में भी रेड क्रॉस गोल्ड मेडल मिला फॉर द हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम. हेडक्वार्टर्स पे आने के बाद मैंने एक अच्छा समय गुजारा एक बहुत छोटे से महकमे में, और ये मेरे लिए बहुत ही एंजॉयबल रहा. दिस वाज द डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और एंड द हरियाणा स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और हैरेडा. इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम एट द नेशनल लेवल ऑल्सो. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलके हमने एनर्जी एफिशिएंसी कोड्स, एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग कोड्स, द ग्रीन हाउसिंग रेटिंग, ग्रीन बिल्डिंग्स कोड, द गृह कोड, स्टार रेटिंग जो आजकल हम सारे प्रोडक्ट्स में देखते हैं, ये सब चीज़ें तब डेवलप की गई. एंड हरियाणा was at the forefront. We were the first state to mandate solar geysers and solar lighting, जिसके लिए हमें लगातार 3 साल एनर्जी एफिशिएंसी नेशनल अवार्ड्स भी मिले. हैरेडा के बाद आई वुड से बहुत से और डिपार्टमेंट्स थे बीच बीच में, इरिगेशन, टूरिज्म, एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. बट आई एंजॉयड टूरिज्म अ लॉट. आई वाज एमडी टूरिज्म एंड 3 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले करवाने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला, विच इज़ अगेन वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस टू सेट अप एंड रन दैट इंटरनेशनल मेला, जो अपने आप में एक it's a legend in itself. I was also in the Chief Minister's office and I was Chief Electoral Officer Haryana. Then I got a chance to work at the Government of India. For 3 years I was advisor in the Economic Advisory Council to the Prime Minister. ये एक बहुत अलग टाइप का काम था, एक नॉलेज बेस्ड काम था, जिसमें a lot of research and thought and writing and background writing instead of being in the forefront and taking decisions was involved. So this was also a very enriching experience. Until very recently, last month तक I was Additional Chief Secretary Agriculture in Haryana. 2 साल से अधिक मैंने एग्रीकल्चर को संभाला. और हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पे कृषि से संबंधित सभी योजनाएं, किसानों से संबंधित सभी मामले बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही आई वुड से एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी पोस्टिंग मिलती है जो इम्पॉर्टेंट नहीं समझी जाती है, और उसी पोस्टिंग में शायद आप ऐसा काम कर पाओ जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे. मुझे जब डायरेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी और हरियाणा स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लगाया, वो एक ऐसा ही मोड़ था. रिन्यूएबल एनर्जी वाज नॉट कंसिडर्ड बाय एनी चांस important, but as a result it gave me an opportunity to really study sustainable economy, green energy, green living, solar energy, the role of carbon mechanisms, carbon credits and energy efficiency. इस सारे पे मेरी भी बहुत लर्निंग हुई है. I read up, in fact I wrote papers also during that time. एंड तभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी एक एक्टिवेट हुआ था. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत कुछ कर रही थी. एंड जो एक गृह रेटिंग होती है फॉर बिल्डिंग्स आज के दिन,
कि कौन सी बिल्डिंग कितनी एनर्जी एफिशिएंट है, कितनी सस्टेनेबल है, कितनी ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रही है, कितना कम पानी यूज़ कर रही है. सो गृह रेटिंग इज़ अ वेरी इलैबोरेट रेटिंग. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जिसने ये गृह रेटिंग डेवलप की. साथ ही ब्यूरो के साथ हम लोग ने ये ब्यूरो लॉन्च दी स्टार रेटिंग प्रोग्राम. उसमें भी इनपुट्स रही काफ़ी कि उस टाइम इंडिया में किसी भी अप्लायंस की एनर्जी रेटिंग एफिशिएंसी रेटिंग नहीं थी. एंड एज अ रिजल्ट हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसमें हमने 2 चीज़ें करी उस टाइम. आई गॉट द CM टू अग्री टू रिप्लेस ऑल regular bulbs and all regular tube lights in one go with CFLs and energy efficient slim tube lights. And it was a big operation because we did the collection of the old material, we ensured safe disposal. And उस टाइम CFL एक CFL 300-400 रुपए की आती थी. अब ये इतनी पुरानी बात है, अब तो लोग LED यूज़ कर रहे हैं. But simply because government of Haryana raised a demand for such a massive quantity for CFLs, the CFL market completely changed. वो 400 रुपए की CFL का rate came down to 150 or 160 क्योंकि there was a demand in lakhs and lakhs and lakhs. So that was a game changer and everyone said अच्छी खासी चलती हुई ये bulb और tube light उतरवा रहे हैं. But we quantified it and we ended up saving something like 7 to 9 megawatts of electricity simply in the government by changing to energy efficient equipment. As a result, Haryana got the National Energy Conservation Awards for 3 years in a row because we were doing, we were doing these shifts, not just incremental changes, but disruptive change. And the biggest growth happens when you embrace disruptive change. So that was a great experience. And more recently, I was senior advisor in the Economic Advisory Council to the Prime Minister. And I was steering and coordinating some very exciting work. I can't disclose too much, but some very exciting work on the blue economy and all aspects of the blue economy. Many portions of that have already been announced by the Honorable Prime Minister relating to separate ministries. That was a great experience. And most recently in agriculture, Haryana is one of the states which has a falling water table. Paddy is widely grown and paddy is lucrative for farmers. So I thought, how can we make at least paddy more water efficient so that we at least use less water? There's a technique called direct seeding of rice. Normally we know that rice is you plant it in in small lots and then transplant it in a field which is full of water, flooded with water. Whereas DSR or direct seeding of rice, we just make the soil moist and directly plant the paddy. There is no flooding of the fields, there's no transplantation. And this saves about 25 to 30% water. So 2 years back, in 2021, I started the DSR as a pilot in Haryana. And we gave a financial incentive of 5,000 rupees to any farmer up to 2.5 acres who would adopt DSR. Idea was that it would be a demonstration scheme. The farmer who would get the incentive would be duty bound along with the agriculture staff to sensitize at least 10 more farmers. So we did that in about 20,000 acres in year 1, that was 2021. The next year, that is 2022, we upscaled the scheme, set a target of about 1 lakh acres, up from 20,000, 5 times. Reduced the subsidy from 5,000 to 4,000 and opened the scheme for everybody. We got a great response. And this year, we had set a target of 2 lakh acres, which has already been crossed. I'm told that the agriculture department, the farmers have already registered more than 2.5 lakh acres for DSR. And we give the money, we have all their accounts on our portal. Everything is given through DBT, that is direct benefit transfer, after field verification. So a very elaborate architecture has been set up. It's been very challenging, but supremely satisfying. So this, these are just a few of the challenges or the sheer scope which an IAS officer is able to deal with in his or her journey. We are dealing with so many different things, and that is why it's important to keep your own learning curve alive. So thank you, friends. I hope you've enjoyed what I've shared with you today, and wishing you all the best on your journey.